Hello and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2342-1050. For listeners calling from outside Delhi, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरें, साथ ही उन पर चर्चा भी करेंगे। यहाँ बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। हमारे 3 टेलीफोन नंबर्स हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23421050। इस पर फोन करके आप सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हमेशा की तरह इन नंबरों से पहले 011 अवश्य डायल करें। स्टूडियो में चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और अब अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं मेरी सहयोगी अनुभा रोहतगी। Thank you, Vibhuti. WPI-based inflation remains in negative territory for the 6th consecutive month in September. Domestic stocks end marginally lower. Sensex lose 116 points. Nifty settles at 19,732. And gold and silver prices decline in December contract at MCX amid weak global sentiments. थोक महंगाई दर पर आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में लगातार छठे महीने नकारात्मक अंकों में रही। घरेलू शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद। सेंसेक्स 116 अंक गिरा, निफ्टी 19,732 पर बंद। और नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच दिसंबर अनुबंध के लिए एमसीएक्स में सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट। Wholesale price index WPI based inflation remained in negative territory for the 6th consecutive month in September 2023. As per data released today by the Commerce and Industry Ministry, WPI inflation saw a negative growth of 0.26% in September 2023. Vegetable price inflation eased to 1.54% in September from 5.62% in August. India's Consumer Price Index CPI based inflation eased for the second consecutive month in September to 5.02%. This was supported by a slower rise in vegetable prices and an overall decline in food inflation. The Reserve Bank of India has kept a close watch on CPI data as it's crucial for its bi-monthly MPC meeting. Shishir, we have seen that the wholesale price index for the last many months has been in the negative territory, and this month as well. It's now the 6th month when it is consecutively in the negative territory. How do you interpret this? When we talk about WPI, basically it's what we call is this is the producer's inflation. And the producer inflation is in a negative zone, or what we call as the deflation, for 6 consecutive months. That means the producers are getting lower prices for their produce. And since it comprises of mainly goods, when we talk about the CPI, it comprises of goods as well as the services. But when we talk about WPI, it is only the goods. So that means the good prices are not giving the kind of return which a producer expecting. And the most important thing is that the food inflation, whether we talk about CPI or whether we talk about WPI, in both the category, food inflation has seen much more deceleration than any other item. But one thing we should remember, that manufacturing inflation is picking up, and this month it is in the positive zone. That means the companies who are in the manufacturing sector, they are getting better realization, and that is also reflected in PMI manufacturing, which we saw in the expansionary mode when that data came on the 1st of this month. And the GST collection we have seen is almost 160 lakh crore a month. So that is showing that the manufacturing inflation is picking up. Food inflation is down, which is affecting both WPI as well as the CPI. WPI is more towards the academic interest. It is more when we talk about the CPI, that is the most important when we talk about the bi-monthly monetary policy review,
which RBI is expected to take place in the month of December. So what we are expecting at this moment, that there will be no rate revision. If we take both the data, WPI as well as the CPI, and we can see any kind of change only in the month of August or September next year. For the next 6 to 8 months, the interest rate will remain the same, and at the same time you will see some kind of deposit rate hike. Some of the banks are raising deposit rates to get more and more money because the credit demand is expected to pick up during the festival season. जी चीज़ें कुछ सस्ती हुई हैं, सब्जियों की कीमतों में भी गिरावट है, लेकिन इसी बीच थोड़ा सा इससे उलट आप कोलकाता के बाजार में जाइए, वहाँ सब्जियों की जो कीमतें हैं आसमान छू रही हैं। क्या इसका कारण त्योहार है या आप क्या देखते हैं? देखिए, ये जो अलग अलग क्षेत्र में जो आप महंगाई दर देखते हैं, उसके पीछे कई फैक्टर्स काम करता है। अगर आपको भी याद होगा, पिछले कुछ दिनों में पूर्वी क्षेत्र में काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, और उस तेज़ बारिश की वजह से जो सप्लाई है, सब्जियों की जो आपूर्ति थी, वो प्रभावित हुई, और जिसकी वजह से कीमतों में हमने तेजी देखी। दूसरा ये है कि एक आपका जो है त्योहारों का मौसम भी शुरू हो चुका है, थोड़ा सा कंजम्पशन डिमांड पिकअप होता है, उसका भी असर पड़ा है। इसे आप कह सकते हैं एक मौसमी असर है। एक वास्तविक रूप में उस तरह की बढ़ोतरी वहां पर अभी देखने को नहीं मिलेगी। And before we take this discussion any further, let me remind our listeners that today we are taking calls from you, our listeners. For that, we have Shishir Sinha in the studio to answer your queries. And if you have any questions regarding economy, regarding business, regarding stock markets, do call us today. I'll repeat the numbers for you. It is 2331 4444, 2371 7106, and 2342 1050. And since we are based in Delhi, I would request the callers calling from outside Delhi to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. जैसा कि अनुभा ने कहा, तो 3 टेलीफोन नंबर्स हैं, 23314444, 23717106, और तीसरा नंबर है 23421050। इस पर आप जरूर फोन करें और अपनी जिज्ञासा शांत करें, व्यापार के क्षेत्र में, आर्थिक जगत के क्षेत्र में और शेयर बाजार के क्षेत्र में। Shishir, we've been talking about, fiscal education, fiscal literacy in this program quite a lot. You've been answering those questions from our listeners. Now, you just said that WPI is more of an academic interest, but for a common man, for a person who's not very fiscal savvy or who doesn't know much about economics, what is the relationship between WPI and CPI? Normally, there is a little gap between WPI and CPI, and that is considered the ideal situation, because one thing we should remember, that when a producer is producing good, he will do only for earning some profit. If he is not earning any profit, we will enter into what we call as the vicious cycle, and there we need a virtuous cycle. So they need some kind of price up, so that they could have the profit, and they will go for expanding their production facility. When there will be expansion of the production facility, there will be more and more employment will be created, more and more demand will be generated, and that will have an impact on the overall economy. So when we say WPI is down, that means producers are not getting the price which they should get. The only positive thing, if we take in the deflation number, that month on month basis, this is improving. That means the producers are now in a position to get some more money, and that will help in the expansion of their production. And we have the first listener of the day online with us. That is Mr. Gopal, who's calling us from Mumbai. Mr. Gopal, welcome to Market Mantra. Please ask your question. हेलो, 2 सवाल है जी। पहला तो ये महंगाई के बारे में, आप लोग हमेशा पता नहीं कैसे आंकड़े निकालते हो, कहते हो महंगाई कम हो गई। सर, जहाँ पर मेरा अंदाजा है, महंगाई तो सर दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। दालें देखो तो सर 120 रुपए की 200 रुपए चली गई। कैसे आप लोग आंकड़े निकालते, कोई समझ में नहीं आ रहा है। सवाल ये पहला। दूसरा सवाल आत्मनिर्भर पर है। क्या हमारा शेयर मार्केट आगे चल के आत्मनिर्भर हो जाएगा, जिस हिसाब से डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, ताकि ऐसा का असर नहीं रहे। अगर हमारा मार्केट आत्मनिर्भर हो गया तो मार्केट में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आ जाएगी, डीमेट अकाउंट और ज्यादा खुलेंगे। थोड़ा इस पर जवाब देंगे, अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। जी गोपाल जी, पहला जो आपका प्रश्न है कि हम आंकड़े कैसे निकालते हैं, देखिए आंकड़ों को लेकर के एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किसी एक खास जो आइटम होता है, सिर्फ उसी की वजह से कोई खास वस्तु जो होती है, सिर्फ उसी से महंगाई की दर पे असर नहीं पड़ता है। हम इसमें कई तरह के वस्तु और सेवाओं को देखते हैं जब हम लोग खुदरा मूल्य सूचकांक देखते हैं। आपकी बात में सच्चाई है कि दाल के दाम बढ़े हैं, लेकिन सब्जियों के दाम घट गए हैं। कच्चे
कच्चे तेल में जो भी परिवर्तन हो रहा है उससे पेट्रोल डीजल पे असर पड़ना चाहिए, वो नहीं हुआ है। और एक और चीज आपने गौर किया होगा कि खाने के तेल के दाम जो है वो डिफ्लेशन में है, यानी कि वहां पर जो हम बढ़त देख रहे हैं वो निगेटिव जोन में है, नकारात्मक में है। तो आप अगर अलग अलग सामान को देखेंगे और सबको मिला करके देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ चीजें जिसमें कमी आई है, वो जिस चीज के दाम बढ़े हैं उस पर वो भारी पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको महंगाई दर में कमी दिख रही है। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि शेयर बाजार आत्मनिर्भर हो रहा है, देखिए ये एक हकीकत है कि आज के दिन में विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे शेयर बाजार पर उस तरीके का असर नहीं पड़ा है जो एक पहले अनुमान लगाया जाता था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि घरेलू निवेशक, चाहे वो संस्थागत हो या व्यक्तिगत हो, वो पैसा लगा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़ी है। आज के दिन में लगभग 11.5 करोड़ डीमैट अकाउंट हो चुके हैं। लोग बाजार में जा रहे हैं और संस्थागत निवेशक, चूंकि म्यूचुअल फंड के जरिए भी काफी पैसा बाजार में आ रहा है, तो निश्चित तौर पर हम शेयर बाजार में एक बेहतरी देख रहे हैं। अब पूरी तरह से अगर आप कहें कि विदेशी निवेशक को बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे, शायद वो स्थिति अभी नहीं बनेगी। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं होता है कि आप विदेशी निवेशक को पूरी तरह से दूर कर दें, बल्कि उनका भी साथ रहे, दोनों का संतुलन बना रहे, तो आपके लिए और बेहतर स्थिति बनती है। गाजियाबाद से हमारे कॉलर हैं गौरव। गौरव जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, प्रश्न पूछें। नमस्कार मार्केट मंत्र टीम, जी को नमस्कार। नमस्कार। सर, ये म्यूचुअल फंड में 46 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी तक एसेट अंडर मैनेजमेंट है, सितंबर 2023 का डेटा है। तो अगर हम इसी तरह से ग्रो करते रहे तो हमें तो, और हम जनरली देखा गया है कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर के अक्रॉस द बोर्ड होते हैं, तो वी कैन अज्यूम दैट कि अब FII पे हमें कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दीज geopolitical events, and our market is quite immune to geopolitical events. And second question is about inflation. Is there any non-government organization where we can see really the inflation is at what level? Because in construction sector, I can feel that it is almost 20% in inflation. So government data is kind of, for us, for real people, is kind of, skewed or bogus for us. So where is we can get the real inflation data from any private agency? Thank you. Okay. गौरव जी, आपका पहला प्रश्न था कि म्यूचुअल फंड में जो काफी निवेश पड़ा है, निश्चित तौर पर SIP ने एक उत्साह जगाया है लोगों को, और एक SIP को लेकर के, म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर के झिझक काफी कम हुई है, और जिसकी वजह से लोग म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगा रहे हैं। और हर तरह के फंड में, चाहे आप इक्विटी फंड की बात करें, चाहे हम लोग डेट फंड की बात करें, सभी में पैसा लगा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी चीज है। अब रहा सवाल कि क्या विदेशी निवेशकों की हमारे मतलब निर्भरता बिल्कुल नहीं रहेगी या विदेशी निवेशकों की जरूरत नहीं होगी, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी है। हमें उनकी जरूरत है, कुछ ना कुछ उनका निवेश होते रहना चाहिए। और एक अच्छी बात यह है कि जितने भी वैश्विक अनिश्चितता है, आपने एक चीज गौर किया होगा कि हमारे शेयर बाजार में पहले क्या होता था कि जब कभी भी कोई वैश्विक अनिश्चितता होती थी तो एक झटके में 5%, 7% बाजार टूट जाया करता था। कई बार लोअर सर्किट लगाना पड़ता था, मार्केट में ट्रेडिंग रोकनी पड़ती थी। आपने एक चीज गौर किया कि पिछले कुछ दिनों में जितनी भी अनिश्चितता आई हैं, उनके बीच में बाजार में कारोबार नहीं रुका है, और ये एक जो हमारे देसी निवेशक हैं उनकी ताकत को आप देख सकते हैं। आपका दूसरा प्रश्न था आंकड़ों को लेकर के। देखिए, आंकड़ों पे सवाल उठाना बिल्कुल वाजिब सवाल है, और मुझे नहीं लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन क्या है कि आपके पास आंकड़े जुटाने के तरीके को समझना होगा, और किन किन सामान के और सेवाओं के आंकड़ों को देखा जाता है ये समझना होगा। होता क्या है कि कुछ चीजों में बहुत तेज आपने गिरावट देखी, लेकिन उसका जो वेट है पूरे WPI में या पूरे CPI में वो बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आएगी भी तो उसका असर पूरे हेडलाइन पे नहीं पड़ेगा। तो हमें यह समझना चाहिए कि किसमें गिरावट कितनी हो रही है और उसका वेट कितना है। ये एक तकनीकी विषय है, आम आदमी के लिए समझना इतना आसान नहीं होता है। और हर किसी को लगता है कि अरे हमने बाजार में टमाटर इतना महंगा खरीदा तो महंगाई दर कम क्यों दिखाई दे रही है। लेकिन याद रखिए कि टमाटर एक आइटम है, आपके 1200 के ज्यादा आइटम्स हैं जिनके दाम को हमने
हम लोग देखते हैं और फिर महंगाई के दर का आकलन करते हैं। तो आकलन के लिए आपको फिलहाल तो सरकारी आंकड़े पर ही निर्भर रहना है। बात आकलन की हो रही तो शिशिर, I also want to know from you, like we have been discussing that the WPI has been in negative territory, but do you expect it to, or how soon do you expect it to enter into a positive territory, given the fact that, there is rising crude oil prices are there, and we've had a very skewed rainfall, which has affected our kharif crops also. So do you expect it to enter into the positive territory soon? And how soon? It will. I mean, if you can remember, I was just discussing that we are seeing MOM. There are two ways to see the data. One is the Y on Y, and the another one is MOM, what we call as the sequential data. So if you take the sequential data and if you compare the data of September with the month of August, you will find there is a positive change. That means when the deflation was -6, now it is -2. Yes. So certainly it has gone up. And what we are expecting that by the end of December or January, it should be in a positive zone, and we will end the fiscal year with a wholesale inflation rate of 1% or 1.5%. शेयर बाजार का हाल जान लेते हैं। नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 116 अंक या 0.17% की गिरावट के साथ 66,167 पर बंद हुआ। निफ्टी 19 अंक या 0.10% गिरकर 19,732 पर बंद हुआ। बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स में 0.25% की तेजी रही, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.34% की वृद्धि देखी गई। The key domestic stock indices closed marginally lower amid negative global cues. The BSE Sensex declined 116 points or 0.17% to finish at 66,167. The NSE Nifty fell 19 points or 0.10% to settle at 19,732. However, in the broader market at the BSE, the mid-cap index jumped 0.25% and the small-cap index rose 0.34%, outperforming the benchmark indices. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 11 companies appreciated while 19 companies closed in red. JSW Steel climbed 1.7%, Tata Steel gained 1.6%, and HCL Tech rose 1.2%. On the other hand, Nestle India declined 1.9%, TCS fell 1.3%, and Asian Paints slipped 1.2%. In sectoral indices at the BSE, 9 sectors locked gains while 11 witnessed losses. Metal sector gained 1.4%, consumer durable index rose 0.7%, and industrial sector added 0.5%. On the other side, telecommunication sector declined 0.7%, healthcare fell 0.5%, and power sector slipped 0.4%. The overall market breadth was positive as shares of 2,032 companies gained while those of 1,748 companies declined. A total of 173 shares remained unchanged. And, Shishir, we've been seeing that this is a third consecutive today session when the markets have closed in red. Do you see that as an impact of just the rising crude prices, or it's also because of the Q2 results, that we've been seeing that have been coming out? One reason which you just mentioned about the Q2 result, and if you see the IT companies result, and especially one number which I would like to mention here, that's a rate of hiring that has come down. Number one. Number two, total employees strength have come down. That means they are not recruiting much. And that shows the demand is not picking up. There is a sluggish demand. So IT sector is not giving a kind of confidence to the market where the people are going to buy. Number one. Number two, there are some stocks in the financial services sector which are doing well, especially the banking sector. And yes, today, if you see that public sector banks, they have HDFC Bank results have come out. Both the public sector bank as well as the private sector banks, they are doing well. So that is one positive elements we are seeing. But in terms of some of the sectors where we were expecting some recovery, especially the IT sector, or even in, say, consumer durable sector, we are not seeing that kind of recovery which we are expecting. It may be because of there are geopolitical uncertainty and people are not very sure that what is going to happen. So they are just trying to, what you can say, keep their demand. They are just postponing their consumption. So that is also having some impact on the market. इसी बीच दिल्ली से हमारे श्रोता हैं सुखदेव सिंह जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। प्रश्न पूछिए। Good evening to Market Mantra. Good evening. Sir, my name is Sukhdev. I just want to know
one question about income tax. Sir, we are running two concurrently, one regime and another is old regime and second is new regime. Sir, under new regime, we are not getting any rebate on savings. Does the government not want that the young generation should deposit something for the rainy days? Why they are not giving any rebate on the saving scheme, and why they are not encouraging the investors to save some money? Thank you. Okay. Sukhdev Singh ji, that's a very important point, that whether new income tax regime is discouraging saving or deposit for the rainy days. I think there is a popular belief that people save only because of some tax saving kind of thing. Tax saving is one of the element. It is not the element which encourages saving. There are a number of other factors which help you to save, or which help you to invest, or which help you to deposit the money. It is not something that only because of tax saving. And please also remember, sir, tax savings are done mostly by the salaried class. And if we take the number of salaried class, it's a small number. I mean, 22% of total labor force are coming from the salaried section. So that 22%, even in the 22%, people are saving not just because of the tax deduction, but they are also saving for the rainy day, as you rightly mentioned. And for saving for the rainy day, you don't need any kind of saving. So I don't think that is going to impact much. In fact, if you see the bank deposit growth is very good. And now banks are also putting more and more interest. They are going for increase in the interest rate. That means there is an opportunity. You may say that because of the tax we will be able to get a higher return, but that is one thing. Overall thing is that you are going to get more. And the next caller is from Thane, Maharashtra. That's Mr. Gurunath. Mr. Gurunath, welcome to Market Mantra. Please ask your question. हेलो गुरुनाथ जी, अपना सवाल पूछें. लगता है फिलहाल जी हमारा संपर्क गुरुनाथ जी से हम फिर करने की कोशिश करते हैं. इसी बीच रुपया का हाल जान लेते हैं. विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपये और 27 पैसे पर बंद हुआ. विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 106.48 पर कारोबार कर रहा था. Shishir, before we move on to our next story, we were just discussing, of course, the Q2 result of the various companies and their impact on the market. Now, it's just the start of the season when the results are coming out. There's still a lot of companies which are going to come out with their results. And one particular sector that I want to focus on is the oil sector, the oil marketing companies, OMCs that we call. In the background of the volatility in this, market right now, the way the crude prices are, are going up and coming down, is it going to impact, the Q2 results of the OMCs? Can we say that they might not give up, come up to the market expectations? There are two types of companies, one which are producing and one which are processing the crude. So those who are producing, they will be in a better situation because of the higher crude prices, and their results we will see a better return. In terms of the processing countries, only one advantage they have, that since they made the contract almost 4 months back, 5 months back, so there is a possibility that their contract was at a lower level. So some kind of cushion will be there, but they will be affected. So if we talk about the producers, they will be in a better position. If we talk about the processor or the oil marketing companies, they will not be in that kind of situation. एंड इस बीच में गुरुनाथ जी थाने से हमारे साथ फिर से जुड़ गए. गुरुनाथ जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. अपना सवाल पूछें. नमस्कार मैम. हाँ जी, नमस्कार. सर को भी नमस्कार. नमस्कार. सर, मेरा क्वेश्चन, ये जो ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग जो चलती है सर, क्या ये हमारा मतलब जो आईटी एक्ट है उसके अंतर्गत, मतलब इसके दायरे में ये, मतलब ये जो जब डेवलप करते हैं जो ऐप वगैरह, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी ऐप का, तो ये गवर्नमेंट की कितनी परमिशन होती है इनको? अभी फिलहाल हमारे देश का एक ऐप है, उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसका टर्नओवर कम से कम 20,000 करोड़ के आसपास बोला जाता है. तो कुछ एजेंसियां भी उनकी जांच कर रही है, हमारी केंद्रीय. तो सर, ये कई लोग तो फाइनेंशियली इसके वजह से लॉस हुए. तो क्या गवर्नमेंट इस पे कुछ ध्यान दे रही है और इन पे थोड़ा सा कंट्रोल करके? थैंक यू सर.
गुरुनाथ जी, आपके प्रश्न के पक्ष हैं। पहला तो ये डेवलपमेंट करने का। देखिए, आप ऐप डेवलप कर सकते हैं, जो कानूनी व्यवस्था है उसके तहत आपको ऐप डेवलप करने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पहलू यह है कि आप उस ऐप के जरिए क्या प्रोवाइड करते हैं, किस तरह की सुविधा देते हैं। तो जैसे एक सुविधा जो है, एक जो बात होती है जिसकी आपने चर्चा की, वो है ऑनलाइन गेमिंग की, जिसमें बेटिंग भी शामिल है। देखिए, बेटिंग तो हमारे देश में गैर कानूनी है, वो आप कर ही नहीं सकते हैं। रहा सवाल ऑनलाइन गेमिंग, तो ऑनलाइन गेमिंग में दो तरह का होता है, एक ऑनलाइन मनी गेमिंग है और एक ऑनलाइन गेमिंग है। जैसे आप लूडो खेलते होंगे ऑनलाइन, वो आपका ऑनलाइन गेमिंग है। लेकिन अगर आप जैसे कोई क्रिकेट टीम बनाने की बात करते हैं, वो ऑनलाइन मनी गेमिंग है। तो इन दोनों के बीच में अंतर यह कि जब आप ऑनलाइन गेमिंग लूडो जैसा खेल कर रहे हैं, आपको कोई जीएसटी नहीं देना है, लेकिन ऑनलाइन मनी गेमिंग है तो आपको 28% का जीएसटी का रेट है। तो इसमें कानूनी तौर पर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि कोई गैर कानूनी गतिविधि नहीं होनी चाहिए, टैक्स चोरी ना हो और कोई कालाबाजारी ना हो। इसी बीच एशियाई और यूरोपीय बाजार का हाल जानते हैं। पश्चिम एशिया में मौजूदा भू राजनीतिक तनाव के कारण आज एशियाई बाजारों में कमजोर रुझान देखने को मिले। जापान का निक्केई 2.1% गिर गया, हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 1% लुढ़का और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.8% फिसल गया। सिंगापुर का स्टेट टाइम्स इंडेक्स 0.7% और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.5% गिरकर बंद हुआ। दिन के कारोबार में यूरोपीय बाजार मिलाजुला कारोबार कर रहे थे। जर्मनी का डेक्स मामूली रूप से 0.1% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था, जबकि लंदन का फुट्सी 0.4% बढ़ा। इधर फ्रांस का कैक अंतिम समाचार मिलने तक सपाट कारोबार कर रहा था। और एक खबर है बासमती चावल को लेकर के। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य की समीक्षा पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस समय यह $1,200 प्रति टन है। इस वर्ष अगस्त में सरकार ने फैसला किया था कि वे बासमती चावल के निर्यात को $1,200 प्रति टन पर निर्यात नहीं करेगी। मंत्रालय ने कहा कि चावल निर्यातक संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि चावल का अधिकतम मूल्य निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। सरकार ने चावल की घरेलू कीमतों पर अंकुश लगाने और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्राप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए। मंत्रालय ने कहा कि सरकार द्वारा उचित निर्णय लेने तक वर्तमान व्यवस्था बनी रहेगी। Moving on, oil prices slipped in future market today as investors are cautious about latest geopolitical developments. Global oil prices saw a huge jump last week, but now sign of easing in price is visible as investors are assessing risks of Israel-Hamas conflict. In intraday trade, Brent crude oil futures declined 0.67% to trade at $90.28 per barrel, whereas Western Texas Intermediate dipped 0.56% to trade at $87.20 when reports last came in. सोना और चांदी का हाल। वैश्विक बाजार में नकारात्मक संकेतों के कारण आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध के लिए सोना गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सोना $312 गिरकर ₹59,096 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। दिसंबर अनुबंध के लिए चांदी भी ₹261 की गिरावट के साथ ₹71,026 प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना गिरावट के साथ $1,928 और 20 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। दिन के कारोबार में चांदी भी गिरावट के साथ $22 और 72 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। And that's all we have time for in today's edition. Thank you so much for coming to the studio and participating in the discussion and answering the queries of our listeners, Shishir. Thank you. And before we close, a reminder of the headlines. WPI-based inflation remains in negative territory for the 6th consecutive month in September. Domestic stocks end marginally lower. Sensex lose 116 points. Nifty settles at 19,732. And gold and silver prices decline in December contract at MCX amid weak global sentiments. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 6:30 p.m. Till then, from the entire team, Namaskar. नमस्कार। Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani. The news read by